Hello students, welcome back to the Botaniverse. Previous video रे आमे plant cell wall विषय रे पढ़िथिले. आज आमे पढ़िबा cytoskeleton विषय रे. A three-dimensional network of filamentous protein is there in the cytosol known as cytoskeleton. Okay, so cytoskeleton कोन ना गोटे filamentous structure network माने छंदा छंदी होगी रही थाए कोथरे थाए साइटोसोल मीन्स आमर साइटोप्लाज्म सेल जो साइटोप्लाज्म भितर थाए सेई थरे थाए सेटा को हमें साइटोस्केलेटन बोली कहि थाउ व्हिच क्रिस क्रॉस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके मु कहली क्रिस क्रॉस माने छंदा छंदी हेकी साइटोप्लाज्म भितर थाए. Cytoskeleton consists of the following components having fixed diameter and variable length. Cytoskeleton रो fixed diameter थाए आउ बहुत सारा लेंथ रे थाए वेरिएबल लेंथ रे थाए आउ एटा केते टाइप्स रो ना थ्री टाइप्स रो. व्हाट आर दे आर माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके हमें वन बाय वन ए सब डिस्कशन करिबा. सो फर्स्ट होजी माइक्रोट्यूबुल्स. These are hollow filaments of 25 nanometer diameter and several microns in length. Okay यार length केते several microns और diameter केते ना 25 nanometer and made up of globular proteins. ताले microtubules टा को protein रहती है ना globular protein. एठी हमें कहले ना network of filamentous proteins माने एटा proteins रे तैयारी हिजी से जो filamentous structure टा माने microtubules टा को protein रे तैयारी हिजी globular protein रे तैयारी हिजी. These protein polymers of tubulin are made up of many tubulin monomers. Okay ये जो protein रे polymer किए ना tubulin. Okay ये जो tubulin गुड़ा को बहुत सारा tubulin monomers को नहीं की तैयारी है जी. ओके माइक्रोट्यूबुल्स were first observed by De Robertis and Franke in 1953 in the exoplasm of nerve fibers. So nerve fibers है हमरा तार exoplasm रे माइक्रोट्यूबुल को first observe करथिले ए दी जण साइंटिस्ट. Microtubules are found in the cytoplasm of plant and animal cells. हमरा plant cells और animal cells both cells रे cytoplasm रे हमको microtubules मिल जिवे. यार structure केमती the wall of microtubule consists of 11 to 13 longitudinal strands, each strand made up of tubulin dimers alpha tubulin and beta tubulin. Okay look at this diagram. This is the microtubule diagram. Okay this is alpha tubulin beta tubulin and these are the what protofilament. एटा केते 25 nanometer देखि परछन्ती ए डायग्राम को देखंतु. ओके एटा होची 8 nanometer. This is the diagram of microtubule. Okay and what is the function of microtubule? Microtubules are associated with the formation and movement of flagella and cilia. हम जो flagella cilia था flagella cilia कोथरे हमरो कैमरा से movement रे कैमरा से सेल भीतर जो movement हुए flagella और cilia थे ता सहित ए माइक्रोट्यूबुल्स ता एसोसिएटेड थाए माने फ्लैजेला सिलिया केमती फॉर्मेशन हबो तार मूवमेंट केमती हबो. ओके दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. हमर सेल डिवीजन टाइम रे माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करंती पर्टिकुलरली द ट्यूबुलिन. ओके प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर. जो ट्यूबुलिन प्रोटीन ता थाए माइक्रोट्यूबुल्स रो सेटा ही स्पिंडल फाइबर तैयारी करे. हमर स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन टाइम रे बहुत इंपोर्टेंट आ सेटा किए तैयारी करे ना माइक्रोट्यूबुल. माइक्रोट्यूबुल आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल. हमर जो सेंट्रियोल प्रोडक्शन हुए सेटा को भी किए प्रोडक्शन करे ना माइक्रोट्यूबुल. आल्सो हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म. ओके दे हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन टाइम रे सेल प्लेट फॉर्मेशन रे भी माइक्रोट्यूबुल हेल्प करे. तो माइक्रोट्यूबुल रो बहुत सारा फंक्शन अछि आ बहुत सारा इंपोर्टेंट फंक्शन है सब. ओके now let's discuss about microfilaments. Okay microfilaments को actin filaments भी कहा जाए. The microfilaments are solid filamentous structure having a diameter of 7 nanometer. यार diameter कहते हैं ना 7 nanometer. These are made up of globular proteins called globular actins or G-actins. ओके एटा भी ग्लोबुलर प्रोटीन रे तैयारी हिची. यार ग्लोबुलर प्रोटीन को कोन कहबो ना ग्लोबुलर एक्टिन और जी एक्टिन. Each G actin is composed of a single polypeptide chain. माने प्रति G actin टा कोथरे तैयारी ना सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन रे तैयारी. Discovery by Edward David Cohn in 1968 in Acanthamoeba castellani.
ओके एटा गोटे आकेन्थामोइबा कास्टेलानी एइथरे एडवर्ड डेविड कॉन ए माइक्रोफिलामेंट को डिस्कवर करथिले यार स्ट्रक्चर केमती ना माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स ऑफ 7 नैनोमीटर इन डायमीटर each microfilament consists of two helically coiled protein chains F actin F actin is the polymer of G actin or globular actin okay so look at this diagram this is the diagram of what this is the diagram of microfilament okay these are the G actin how many diameter na 7 nanometer केमती एटा हेची okay this is the diagram of what microfilament or actin filament. So what are the function of microfilament? They guide the exocytosis and endocytosis of vesicle at appropriate sites such as site of cell wall formation. Cell wall formation time re a exocytosis और endocytosis को guide किए करे ये microfilament guide करे. They are responsible for cleavage at the time of cytokinesis of animal cells. Animal cell मानकर तो cytokinesis रो cleavage हुए cytokinesis तो form हुए ता पे responsible की था ये microfilament. They are responsible for cellular movements such as contraction, crawling, gliding and movement of microvilli. Microvilli गोटे अच्छी तार contraction, crawling, gliding और तार movement रे ए microfilament कामरे आसे. They cause growth of pollen tube down the style toward the embryo sac. Okay जो हमारे pollen tube थाए तार जो style थाए सेटा को ग्रोथ कराइबारे embryo sac पाखो को ग्रोथ कराइबारे माइक्रोफिलामेंट रो काम करे तो माइक्रोफिलामेंट रो भी बहुत सारे इंपोर्टेंट फंक्शन अच्छी ओके माइक्रोफिलामेंट को आउ को फिलामेंट कहा जाए ना एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाए तो माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट रो ये सब होची फंक्शन ओके नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ओके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स IFS एमती शॉर्ट फॉर्म रे लिखा है जी ओके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर hollow filaments of 8 to 10 nanometer in diameter intermediate in size between microtubule and microfilament माने microtubule आउ microfilament रो मझिया साइज एटा microtubule माने 8 to 10 nanometer ठीक है that is why they are called intermediate filament एथि में ताको intermediate filament कहजे माने मझिया microtubule रो जतिके diameter microfilament जतिके diameter तार मझिया कहार diameter intermediate filament रो its wall consists of overlapping tetramers of proteins ये wall गुडा tetramers overlapping tetramers of protein consist करे okay so this is the structure of intermediate filament okay केमती है जी 10 nanometer एटा 8 to 10 nanometer को आइतला तो 10 nanometer रो intermediate filament टा this is the structure of what intermediate filament okay so what is the role and function of the intermediate filament intermediate filaments are believed to play mechanical role in positioning various cell organelles मानकु पोजीशन करिवारे इंटरमीडिएट फिलामेंट माने कामरे आसंती माने को सेल ऑर्गेनेल्स को रहबे यार पोजीशन किए करे इंटरमीडिएट फिलामेंट करे provide site for the attachment of microfilament कोठी अटैच हबो ता पय साइट की प्रोवाइड करे इंटरमीडिएट फिलामेंट फंक्शन एज साइटोस्केलेटन ये साइटोस्केलेटन वाइज फंक्शन करे structural proteins of skin and hair हमर स्किन और हेयर रो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के इंटरमीडिएट फिलामेंट आउ सेल शेप ए सब रो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के इंटरमीडिएट फिलामेंट ओके the detailed function of intermediate filaments are तार detailed function भी अच्छी ना nuclear matrix it is mainly formed of intermediate filament okay nuclear matrix सेटा intermediate filament form करे support to membranes intermediate filament membrane मानों को support दिए okay all biomembranes including plasma element nuclear membrane cytoplasm intermediate filament constitute supporting area for cytoplasm माने cytoplasm केमिति कोठी रहिबो cytoplasm माने कोन सेल भीतर थाए तो ये cytoplasm पाई intermediate filament support काम करे ठीक अछि
epithelial tissue, intermediate filament maintain the integrity of epithelial tissue. Okay. Keratin deposited in the skin cells provide protection against abrasions. Okay. Cytoskeletons are involved in a variety of cell processes and function. ये जो cytoskeleton में जो तीन टा देखो microtubule, microfilament, intermediate filament ये माने हमारा cell रो various processes और function रे कामरे involve ହେଇଛନ୍ତି. They are also associated with the cellulose microfibril deposition, intracellular movement etc. तो माने cytoskeleton रो हमारे cell भितरे बहुत बड़ा role अच्छी. Okay. तो ये सब हूँ तो तीन टा डायग्राम तो कही सारी यहाँ हूँ कौन माइक्रोट्यूबुल दिस इज व्हाट माइक्रोफिलामेंट दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट फिलामेंट. ओके सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेस लर्निंग सेशन. आशा करुँचे वीडियो आपण नॉलेज को आहुरी इम्प्रूव कर. फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जदि भी किसी डाउट अच्छी ताहले कमेंट करंतु. परवर्ती वीडियो रे पुणी देखा. Thank you. Bye bye.